Hey guys, welcome to the second episode of Everything About Dual Degree in BITS. तो फर्स्ट एपिसोड में हमने एमएससी फिजिक्स के बारे में बात कर ली है. अभी सेकंड वीडियो के लिए हमारे पास धवल पुंगालिया जी हैं. ऑल्सो हाँ, ये कह लो कैंपस की सबसे हेल्पफुल सीनियर है. इनके पास नोट से लेके डाउट से लेके कुछ भी ट्यूट शीट सारा सब रहता है. तो सब हम इनको अप्रोच करते हैं. तो Hi everyone, I'm Dhaval Pungaliya और मेरी I'm a dual degree branch मेरा है Masters of Science in Chemistry and Bachelors of Engineering in Computer Science. So yeah, I'll just brief you a bit about MSc Chemistry, what all courses are there and all that. Yeah. So yeah, I mean basically, so जो 11-12 में जो बेसिक केमिस्ट्री के कोर्सेज होते हैं वैसे ही है. फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ विद दैट इन द second year you do only chemistry courses and a few common courses with other students, but mainly तुम्हारे सारे केमिस्ट्री के कोर्सेज होते हैं. और थर्ड ईयर में भी काफी केमिस्ट्री के कोर्सेज और इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज होते हैं. तो ये इसमें कौन से है. सो यू हैव द नेम्स ऑफ द कोर्सेज आर लाइक inorganic chemistry 1 2 3, organic chemistry 1 2 3, physical chemistry 1 2 3 4, ऐसे टाइप के नाम है. सो इसमें each chemistry has a different topic that they cover. That's how the basic outline, to give you a basic outline of chemistry. Okay. So, and what are the courses in 3-1? 3-1 में भी वही chemistry 1 2 3 ऐसा. हाँ, so ऐसा एज आई सेड सेकेंड ईयर में सिर्फ केमिस्ट्री के थे, बट थर्ड ईयर में तुम्हारा जो ड्यूअल के साथ जो कोर इंजीनियरिंग वाला भी सब्जेक्ट है ना, उसके भी कोर्सेज रहते हैं. सो राइट नाउ आई एम डूइंग 3 courses of chemistry and 4 courses of computer science. So that's how it will depend from branch to branch. Like मैकेनिकल है तो उसके कोर्सेज रहेंगे. अगर जो पिलानी और हैदराबाद कैंपस वाले सिविल है तो उनको वो रहेगा. ऐसा इट विल डिपेंड फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. सो केमिस्ट्री तो है ही, साथ में बाकी भी है. आपको कौन सा पसंद है, फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? देखो, जिसको मतलब मेरे को पर्सनली केमिस्ट्री ऑन द होल काफी पसंद है और अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है. सो आई डोंट माइंड स्टडिंग आइदर ऑफ द थ्री, बट इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ज्यादा रट्टा बेस्ड, ऑर्गेनिक इज लॉजिक बेस्ड, एंड फिजिकल में इक्वेशंस समझनी है बस, बाकी तो हो जाता है. इट्स नॉट लाइक सम वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. बट हाँ, वन थिंग इज जो 12th में 11th-12th में जो करा है उससे थोड़ा अलग रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुम अब कोर केमिस्ट्री में जा रहे हो. केमिस्ट्री के कोर्सेज ज्यादा एक्सटेंसिवली तुम पढ़ोगे, उसमें काफी ज्यादा डिटेल में, एंड न्यूअर टॉपिक्स विल बी देयर, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर जिसको केमिस्ट्री 11th-12th में पसंद था, he will definitely enjoy, definitely. And labs, आप कितना in depth experiment करते हो labs? So labs में, so in 2-1 we didn't have any lab. In the second semester we had one lab. Third semester, 3-1, 3-2. So total 3 labs in chemistry we have. And it's interesting to do the experiments and play around with chemicals. कभी accidents हो जाते, थोड़ा careful रहना पड़ता है, but it's fun. मतलब overall mixing, 12th में practicals में किया ही होगा I'm sure काफी बच्चों ने. So it is interesting. सही है. And हाँ, okay fine. So if I'm taking MSc chemistry, what मैं like future में और क्या कर सकता हूँ? What is the scope of MSc chemistry along with any other इंजीनियरिंग ब्रांच? जैसे आपने CS प्लस MSc केमिस्ट्री लिया है, तो आई थिंक आप उसके बारे में ज्यादा बता पाओगे, बट और इन जनरल MSc केमिस्ट्री in general, so like one very good upcoming field of research. So you can basically chemistry liya na, you can get into research field. So there are generally 2 types of students who take up these dual degrees. They either want to get into the research side or the placement side जाते हैं, तो फिर they tend to get into IT companies or core में, basically not into the research side. Yeah. So chemistry point of view से we've got both scopes open. So there are some companies that focus on, they specifically require students who have a in-depth knowledge of chemistry and basically quantum chemistry बोल सकते हैं, या फिर computational chemistry, ये एक बहुत upcoming field है. So
So as I said, as he asked, combination of chemistry and computer science. The word itself tells computational. So you need to logic based काफी रहता है, equations भी है, and it is an interesting field of research. Then there are students who go for after doing MSc chemistry, they go for PhD in chemistry itself because they loved the course and they got so much involved in this chemistry as a whole that instead of focusing on the BE degree, they focused, as I said, they focused on the research side and went for PhD and into great universities abroad, like काफी बड़े बड़े आईवी लीग टाइप के या फिर यूके में जो बड़े यूनिवर्सिटीज है, ऐसे काफी स्कोप इज रियली ग्रेट फॉर फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इन केमिस्ट्री. I can assure you that. सही है. So I myself am, though I'm doing computer science, I might consider getting into chemistry if I don't get a hang of computer science. अभी तो just start हुआ है, but 2 years down the line say I'm not much keen towards, if I'm not keen towards CS, I might decide to get into chemistry because I loved this part. So yeah, that's a very good thing. Yeah. Also, yeah, so a lot of juniors, मेरे juniors जो होंगे अभी, they are asking कि आपको free time कितना मिलता है. So MSc physics में भी उन्होंने पूछा था, and MSc chemistry में how much free time do you get in your second and your third year? Okay. First year. So yeah, this is an important question, I would say. Yeah. So देखो फर्स्ट ईयर में ना, so second year में काफी free time रहता है. Trust me, second year you can either enjoy a lot or focus on developing skills a lot, or you can obviously do a combination of both. So I prefer doing this. थोड़ा सा skills भी develop करो, थोड़ा chemistry भी पढ़ लो, और थोड़ा मतलब enjoy भी करना ही है. College life आए हो तो enjoy तो करना ही है. That is there. But at the same time studies are also important. तो वो एक चीज है. फिर थर्ड ईयर में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, to be honest, because you are studying 2 degrees at the same time. So ऐसे जैसे मेरा एग्जांपल, ये केमिस्ट्री का हुडी पहना है और अंदर सीएस का टी शर्ट है, सटल फ्लेक्स. बट हाँ, so third year में it's hectic, to be honest, because a lot of courses are there, और सब में पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. बट कंसिस्टेंसी इज द की. इफ इन जनरल कॉलेज लाइफ में या लाइफ में भी ऐसा याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द की. इफ यू डू मतलब किसी भी चीज को तुम कंसिस्टेंटली करोगे ना, से पढ़ाई का एग्जांपल लिया तो स्टार्टिंग से ही चालू करो ना. टाइम पास क्यों करना है? टाइम पास करो, सिर्फ टाइम पास मत करो. तो पढ़ाई कंसिस्टेंटली करो. तो जैसे मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ये फंडा फॉलो किया मैंने. कंसिस्टेंटली आई स्टडीड जो भी कोर्सेज थे, and I enjoyed with friends. I was in various clubs and departments. So that's one thing. Time manage हो सकता है. It's up to you how you do it. So yeah, that's my takeaway कि consistency is the key. That's it. Nice. मेरे को भी follow करना पड़ेगा ऐसे. हाँ. Also हाँ. आप तो करते हो सर, आप तो प्रो हो काफी, इतना सब कुछ मैनेज कर लेते हो अच्छे से. अरे थैंक यू यार. अबे also ये अब लास्ट क्वेश्चन ये है, मतलब बेसिकली जो भी, मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना कि उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं होता कि वो CS या EC या फिर कोई डिजायर्ड ब्रांच ले पाए. So they kind of look at so they take a dual degree and they aim for CS or anything else. So since you have gotten CS, काफी questions आए थे. So how did you? So any tips for these people कि CS कैसे लेना and how to study in first year and tips like that? Yeah. So one thing, as I just now mentioned about consistency, ठीक है, वो एक चीज definitely याद रखो. और अब तो most of you this semester तो you will be at home only. Next sem we don't know how things will go about and when the first year students will be called into the campus. But घर पे ट्राई करो कि थोड़ा पढ़ते रहो रेगुलरली. थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि you've just cleared so many, more than 2.5 years you people have studied, and it will be tough to वो mental state से थोड़ा सा मतलब ऐसे relaxed feel free type रहोगे तुम लोग. But just
ट्राई टू मेक अप योर माइंड कि हाँ थोड़ा दिन में 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा सा पढ़ लेना है बस। तो उससे क्या होगा, जो लोग ड्यूअल लेंगे ना, उनके लिए स्पेसिफिकली बोला, सबके लिए है वैसे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री स्पेसिफिकली, कि ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट एंड थोड़ा सा रेगुलरली पढ़ते रहो, एंड यू विल हैव सीनियर्स टू गाइड यू. Like we have this program called peer mentorship program. So over there we have seniors who are allotted to guide the first year students. So they will be there. Kuch bhi doubts for you can definitely ask them. So that's one thing कि consistently पढ़ते रहो, और campus जब आओगे ना तब मतलब फ्री टाइम रहेगा, पक्का रहेगा. अब तुम्हारे पे है कि तुम वो फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे. बहुत ज्यादा अगर टाइम पास किया तो फिर भूल जाओ CS, टू बी ऑनेस्ट मुश्किल होगा फिर. बट थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा. जैसे मैंने आई वाज इन 9 क्लब्स एंड डिपार्टमेंट्स इन माय फर्स्ट ईयर, मे बी 8. सो still I managed to get high CGPA and I managed to get CS. So that's what I mean. I tell my juniors the same thing now I'm telling you people also कि impossible नहीं है वो, it is doable. So ऐसे डरो मत उससे और करो अच्छे से और हो जाएगा. मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का लाइफ में, और थोड़ा ऐसे थोड़े चीजें वो फॉलो करते रहो, अच्छे से हो जाएगा. बस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को. ठीक है. मतलब अब आपको और कुछ बताना है, कोई टिप्स देनी है, या आई थिंक और कुछ बताना है डुअल डिग्री के आपके केमिस्ट्री और कुछ. हाँ, ये बहुत आगे का है. वैसे काफी लोग सोच के आते हैं कि हाँ ड्यूअल में CS ले लूंगा, मजा. ऐसा सबको नहीं होता है. मतलब it's not necessary that you will definitely like that branch. So I mean ऐसा मत सोचो कि अटक गए तुम यहाँ आके, ऐसा नहीं है. यहाँ पर सीनियर्स है जो लोग एक ब्रांच लेके दूसरे ब्रांच के कोर्सेज करके they went into that field. So just saying कि it's not like तुम लोग से सिर्फ केमिस्ट्री पसंद नहीं था बट स्कोर की वजह से केमिस्ट्री में आ गए और अब पता नहीं क्या करना. ऐसा नहीं है. There are students who are in chemistry and doing finance minor. So that's what I will tell कि ऐसा मतलब स्कोप बहुत स्कोप है आगे, कुछ भी कर सकते हो तुम. एंड देर आर सीनियर्स इन एवरी फील्ड टू हेल्प यू आउट, बी इट सिविल सर्विसेज और फाइनेंस सेक्टर और IT सेक्टर और एनीथिंग और रिसर्च फील्ड. देर आर सीनियर्स टू हेल्प यू आउट. दे विल डेफिनेटली गाइड यू. एंड मतलब ये तो बहुत आगे का बोल रहा हूँ मैं, बट ये एक फैक्टर होता है आई फील बिफोर यू ज्वाइन अ कॉलेज टू कि 4 years डाउन द लाइन क्या करना है. थोड़ा बेसिक सोच के रख के उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं कि you have a lot of scope over here. So don't be disappointed if you end up in chemistry and you don't like that. And like हाँ, मतलब I would back on this कि the network and the senior junior interaction is amazing. मतलब तुम कुछ भी हेल्प लेके कहीं भी चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, वो वहाँ कोई ना कोई होगा जो तुम्हें गाइड करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल कोई मुझे वीडियो बनाना होता है, मैं किसी भी सीनियर को अप्रोच करता हूँ, सब बहुत अप्रोचेबल है. एंड इट्स अ वेरी गुड कल्चर है. तो आ जाओ यहाँ पे, गोवा कैंपस बहुत ही ज्यादा अच्छा है. और गोवा है मस्त है, चिल है. मतलब ऐसे आओ कभी मिलो, मेरे को मैसेज कर देना, अपन जाएंगे किधर एंजॉय करेंगे बाद में नेक्स्ट ईयर. और देवांश भैया तो है ही. चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. द स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनको ऑल द बेस्ट.